Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in class 6. Dear students, this is your English teacher, and today I'm going to start a very important lecture of grammar, which is on page number 11, and the title of this lecture is Articles. So before starting this lecture, you should open your books at page number 11. On 11 page, you can see on the screen, this is articles. Now, you should know first of all that what is articles. Dear students, articles are the words like a, an, and the. Now, what is the function of article? So you should know that they define whether something is specific or unspecific. And there are two types of articles. You can see on page number 11. First is indefinite article, a, an, and another is definite article, the. Now you can see this is the usages of articles, okay? The first, there are four usages of indefinite article, a, an. So the first use of indefinite article is we use a, an with the singular nouns. Here they are searching for a new servant. Arshad is playing with the a toy car. ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, और ये पेज नंबर 11 पे आप इसको देख सकते हैं। आर्टिकल्स जो है ये किसी भी नाउन को ख़ास या आम बनाता है, ठीक है। और फर्स्ट जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा है दी, इस ब्रैकेट में आप इसको देख सकते हैं, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इसके कुछ इस्तेमाल यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, तो इसका फर्स्ट यूज़ जो है वो है इसको हम सिंगुलर नाउन्स के साथ लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, न्यू सर्वेंट, ठीक है, ये टॉय कार, वी विल गो टू कराची इन एरोप्लेन। तो ये दोनों टॉय कार और न्यू सर्वेंट ये तो सिंगुलर हो गए, लेकिन यहाँ पे ए जो है इससे पहले हमने एन लगाया है। So all of you remember that whenever you saw a word having a vowel sound like a, e, I, o, u, okay, so we use n before vowel sound. तो एरोप्लेन में यहाँ पे आ साउंड ये वाउल का है, तो इससे पहले हमने एन लगाया है, ठीक है। दूसरा यूज़ इसका है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का है। वी यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन विद एडजेक्टिव्स, राइट। Adjectives are the words which say something about noun. Noun के बारे में आपको कुछ ये बताता है, इसको हम इसमें सिफत बोलते हैं। For example, he is a tall boy, she is an intelligent girl, there's a bottle on the table, ठीक है। तो ये adjective से पहले हम इसको लगाते हैं। तीसरा यूज़ इसका ये है, indefinite articles, we use indefinite article a and to say what someone does, कि कोई क्या करता है, इसके साथ हम लगाते हैं लाइक माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, सदफ़ इज़ अ स्टूडेंट। तो डॉक्टर स्टूडेंट जो है ये इससे पहले हम लगाते हैं, क्योंकि टू से व्हाट समथिंग डज, कोई क्या करता है, तो ये जहन में आपने रखना है, तो फिर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसका लास्ट यूज़ जो है टू शो द पर्सन आर थिंग, शख्स या चीज़ को दिखाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। किसको? इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को। लाइक शी इज़ अ पीपल एट यूनिवर्सिटी रोड स्कूल, देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ शीप ऑन द फार्म। तो ये पीपल और फ्लॉक ऑफ शीप को दिखाने के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल दी। अभी इसका जो यूज़ है वो आपको बताते हैं। फर्स्ट नंबर पे कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन नेम्स, जो नेम्स जो है वो ख़ास हैं, प्रॉपर हैं, उससे पहले हम लगाते हैं लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ विजिटिंग रशिया नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये स्पेसिफिक नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हम लाजमी दी लगाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है with adjectives are to talk about groups of people। जब ये हम adjectives के साथ लगाते हैं, ठीक है, adjectives के साथ लगाते हैं,
या जब भी हम लोगों के ग्रोह के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं. मिसाल, लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर. ठीक है. आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस. तो ये हम ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम लगाते हैं. द थर्ड यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी इज टू रेफर टू अ सिस्टम और सर्विस. जब हम किसी निज़ाम या किसी सर्विस का हवाला देते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं लाइक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन टू रीच लाहौर. आई हर्ड इट ऑन द रेडियो. यू शुड टेल द पुलिस. तो ये सारे सिस्टम्स और सर्विसेज हैं, तो इससे पहले हम लगाएंगे इसको. द लास्ट यूज़ ऑफ a definite article D is we use it with a superlative degree of adjective. Adjective की 3 डिग्रियाँ हैं. एक जो है फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव. ठीक है. तो जो लास्ट डिग्री है उससे पहले हम दी को लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, he is the tallest boy in the class. Now tall, taller and tallest. So tallest is superlative degree, so we use the. Now dear students, with the help of that charts you studied, you have to choose the correct article for each of the following on page number 12. Now the first one, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was looked after by, this is blank, foster mother. So the right answer is A. Okay. A. This is the right answer. Number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never told, this is blank, lie. So the right answer is A. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never told a lie. The third one, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was kind to, this is space blank, poor slave. Slave ये गुलाम को बोलते हैं. So the right answer is D. Number 4, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was, now this is blank, grandson of Hazrat Abdul Muttalib. So the right answer is D, the grandson, because this Hazrat Abdul Muttalib, this is proper noun, so you should use the before proper noun. Okay. Number 5, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated the rich and dash, this is blank, poor alike. Poor, this is it means gharib. So the right answer is the poor. Number 6, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was blank, honest man. Now here you can't use A here, because honest have a sound of, it has vowel sound, sound here, so you should use N. Okay. Number 7, they usually spend their holidays in, this is blank, mountains. So the right answer is the mountains. Los Angeles has blank, ideal climate. Los Angeles, remember that Los Angeles is a southern California city of USA. Okay. This is the city of California in US. So the right answer is N, because this word ideal has a vowel sound. Number 9, this is blank, best Chinese restaurant in the country. So the right answer is the best Chinese restaurant. I love living in this is blank, city. So here there's no article, right? So the right answer is no article. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 10 में इसमें वावल जो है A N D, इसमें से कोई भी नहीं आता. सो द आंसर इज़ नो आर्टिकल. इसमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर जुमला कंप्लीट है. आई लव लिविंग इन दिस सिटी. Number 11, someone call, this is blank, policeman. Now the right answer is the policeman. Number 12, I don't like, this is space, street dogs, but I like my brother's dog. So the right answer is the street dogs, but I like my brother's dog.
Number 13, I didn't see him in this space 5 years. The right answer, here you can see that there is no article, so the right answer is this one, no articles. यहाँ पे भी कोई article नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी sentence complete है. Number 14, my this space teacher's name is Wasim. So my teacher's name is Wasim. Without any article, this is a complete sentence. So the right answer is no article. Number 15, Bilal enjoys reading this space mystery novels. So you can see that without any article, this sentence is also, this is a complete sentence. So the right answer is this one. Number last 16, do you remember this space man that we saw last night? So the right answer is the man that we saw last night. Dear students, I hope you enjoyed today's lesson. Keep watching our videos and stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.